हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड फॉर प्लेसमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इनर जॉइन। सो बेसिकली वी हैव कवर्ड लाइक सिंगल टेबल और सिंगल टेबल की जो भी क्वेरीज थी वो हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया। जो ज्वाइन होता है ना वो बिटवीन दो टेबल के बीच में होता है, राइट। सो ये जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है अभी तक नेक्स्ट 12-13 लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन और कितने ज्वाइंस हैं हमारे पास, राइट। सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इनर ज्वाइन. So let's say if I'm having like customer information stored in the customer table, like mobile number, email ID, address, and because वो customer से related है, right? So हम लोग उसे customer table पे store कर देते हैं. अब कस्टमर इन्फॉर्मेशन ना इन द सेम वे हम अगर सेपरेट करना चाहें लाइक ऑर्डर टेबल, सो ऑर्डर टेबल में हम लोग स्टोर ऑर्डर के जो भी डिटेल्स होंगे जो कस्टमर ने ऑर्डर दिए हैं उसे हम लोग ऑर्डर टेबल में स्टोर कर देते हैं, राइट। सो नाउ अगर हमें कस्टमर से रिलेटेड ऑर्डर को फेच करना हो, सो लेट्स सी अगर हम लोग ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर ज्वाइन। सो बेसिकली जो इनर ज्वाइन है वो अगेन दो टेबल में लगेगा। तो हमारे पास ऑर्डर के डिटेल्स हैं ऑर्डर टेबल में एंड कस्टमर के इन्फॉर्मेशन है कस्टमर टेबल में, राइट। सो लेट्स से अगर स्पेसिफिक टू दैट कस्टमर अगर हमें किसी ऑर्डर को फेच करना हो तो हम लोग इनर ज्वाइन का यूज़ करते हैं या फिर ज्वाइन का यूज़ करते हैं. Join will be always with respect to two tables. So here select star from order join customer. एंड अगर आप लोग देखेंगे तो कस्टमर आईडी लाइक वी नीड यूनिक आइडेंटिफायर. सो आइडेंटिफायर वो होता है जो दोनों टेबल में अवेलेबल हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सर्चिंग फॉर द लाइक इंडेक्स और द आइडेंटिफायर. सो कस्टमर आईडी इज इक्वल, लाइक अगर हम लोग देखेंगे तो कस्टमर आईडी ऑर्डर में भी अवेलेबल है एंड ऑर्डर एंड कस्टमर टेबल में भी अवेलेबल है. सो आई एम गोइंग टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर ज्वाइन कस्टमर्स table. So both are table order and customers. On order dot customer id is equal to customer dot customer id. So basically customer id is the parameter जो दोनों टेबल में अवेलेबल है, ऑर्डर में भी as well as it is also available in customer as well. So with respect to customer id हम लोग fetch कर रहे हैं रिकॉर्ड ऑर्डर से भी एंड कस्टमर से भी. सो यहाँ हम लोगों ने स्टार यूज़ किया है, मीन्स इट विल fetch all the records. So now let's change it to the few tables. So you can see the customer table के भी जितने रिकॉर्ड्स है वो भी हमारे पास है आउटकम में, और ऑर्डर टेबल के तो रिकॉर्ड है ही बिकॉज वी हैव यूज्ड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ज्वाइन ऑर्डर. सो मीन्स कस्टमर एंड ऑर्डर बोथ आर बीन ज्वाइन. नाउ विल सेलेक्ट few like specific columns which is order id, first name, last name. So you can see order id is being fetched by ऑर्डर टेबल, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम इज़ फेच बाय कस्टमर टेबल, ठीक है. सो ये हमारा जो कस्टमर आईडी है दैट कस्टमर आईडी विल बी कॉमन इन बोथ द टेबल्स. सो इफ आई एम गोइंग टू फेच कस्टमर आईडी, सो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड टेबल नेम, राइट. सो you can see the customer id will be like in dilemma because it is available in both the tables. So that's why that will be giving as a like placeholder. Okay, so executing this query, so we are getting an error with when we are executing along with the customer id because the customer id need to be available in the both the tables. So unfortunately we cannot show this error because the size of the window is little smaller. Okay, so that's why it was not being showing in the previous screen. Anyway, so mysql is not sure whether the table to select the column from which table. Okay, so that's why it is giving an error. Now if I am specifying order dot customer id, so now अभी क्या होगा, जो order table के customer id होंगे that will be shown. So in that case my query will be executed. If I am executing only customer id, then it will be having a dilemma whether to pick it from the order id or order table or customer table. ठीक है. So यहाँ पे जो customer id है that is being shown by the order table, that's why it is executed successfully. Hope it is cleared so far. So good. Okay, so now we'll finish this tutorial, and if we have if you have played like close attention, so we can repeat the multiple places. Okay, so this is how it could be. Now let's make the code more simpler or lines. So to that I can have this order as orders as O and customer as C. So whether to write again and again order, so I can instead of writing order I can write O if I am writing it like this.
Okay, so if I'm writing order O, so here again I can write it as O because I have given an alliance to the order O, and customer if I'm giving as a C, customer table alliance I have giving as a C, so wherever the customer table is required I can use C. Okay, so यहाँ तक आपको clear हो गया होगा. Now let's head back to the exercise. So in this exercise, I want to look into the order table item, so that in this table we have the column of order ID, product ID, quantity, unit price, and now I want to I want to write a query to join this table from the product table. Okay, so order का जो table है वो product table के साथ join करना है, and that's the following quantity, unit ID and the place ID will be shown here. Okay, so at first let's select everything we have it in the order table. Okay, so let's solve this. Okay, so for solving this particular question, what I'm going to do, I'm going to select everything whatever we have it in the order item. Okay, so order item is a table, and that order item I'm going to join with the product. Okay, so if I'm joining like this on, I'm having the order item, and this I required a key, right? So instead of writing order item, I'm giving an alliance of OI, and the product I'm giving an alliance of P. So OI dot product ID is equal to P dot product ID. Okay, product ID is common in between both the tables. ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे product ID यूज़ कर रहे हैं. होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा. सो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी यूज़ करें क्योंकि प्रोडक्ट आईडी जो है वो दोनों टेबल में है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट प्रोडक्ट्स, आई एम राइटिंग इट पी बिकॉज आई हैव गिवन अलायंस टू द पी. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है. So that's how the alliance is working. If I'm going to execute, I'm getting every single thing in this table. Okay, so let's query this points, or if you want any specific things to be executed, so that specific. So till now I am executing everything. Now I have to execute only the specific thing, which is order ID, that I will be taking a table as OI, which is order items. So ऑर्डर आइटम्स की टेबल्स को हम लोग फेच कर रहे होंगे, एंड देन प्रोडक्ट आईडी के कॉलम को, बट बिकॉज दिस कॉलम एग्जिस्ट इन बोथ द टेबल, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ PI. नाउ OI because it is available in both the tables, so that's why I am giving a OI because of the order item, and quantity and unit price. ठीक है, यही सारी चीज़ चाहिए होंगे. Now if I'm going to execute this query, my query will give me order ID, product ID from order item table, quantity and unit price. ठीक है, यहाँ तक बहुत क्लियर होगा होप, और बहुत सॉर्टेड होगा. Order ID will be taken from the order item, product ID will be taken from the order item, quantity and unit price will be taken from the quantity product table. ठीक है, तो अगर ये सॉर्टेड है, if I'm going to run this query, I will be getting a unit ID, unit price, quantity and product details. Okay, so hope this is clear. And so unit ID I'm taking it from the order item again, so I'm going to just replicate it because unit ID is available. So you can see it is everywhere. So this is sorted. Thank you so much guys, be with us and do subscribe to Code for Placement for more such videos. I will be bringing up more tons of video on SQL tutorials. In the next video we will be talking about join again, the next type of join. Thank you.